मेरा वॉइस प्रॉपर्ली आ रहा है ना? Yes, ma'am. Okay. So now we are starting with the next thing, that is your architecture of JDBC. So वहाँ पे तुम लोग देख सकते हो फर्स्ट JDBC आर्किटेक्चर, उसपे हम लोग को 2 टायर एंड 3 टायर, ओके, 2 है आर्किटेक्चर्स, वो हम लोग प्रॉपर्ली देखेंगे। उसके बाद में JDBC प्रोग्राम यूजिंग DML स्टेटमेंट, जैसे तुम लोग को जस्ट मैंने अभी बोला, DML स्टेटमेंट मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ओके, उसमें हम लोग को इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ये वाले वाले क्वेरीज रहते हैं। सो उसके लिए हम लोग को अलग मेथड यूज करनी पड़ती है, अपडेट करके रहती है, वो हम लोग को मेथड यूज करनी है। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट। सो उन्होंने फर्स्ट JDBC कनेक्टिविटी जो है, द जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी स्टैंडर्ड जावा एपीआई, उसके बारे में जस्ट ऑब्जेक्टिव्स में इंट्रोडक्शन दिया है तुम लोग को। उसके बाद में या JDBC आर्किटेक्चर, ओके, जस्ट okay, so JDBC architecture, Java database connectivity supports 2-tier as well as 3-tier architecture to access the database. So they are also called as processing models for database access. So this is one thing, you can highlight this. Okay. So first we will see what is 2-tier architecture. See the diagram. यहाँ पे क्या है, फोकस ऑन द डायग्राम, ओके। इसको 2-टायर जो आर्किटेक्चर है उसको क्लाइंट एंड सर्वर, ओके, दिस इज क्लाइंट एंड सर्वर। सो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे देखो, यूजर है, एप्लीकेशन है, एंड वो यूजर एप्लीकेशन थ्रू डायरेक्टली डेटाबेस को कनेक्ट होता है। जो भी वो क्वेरी करेगा, जो भी वो क्वेश्चन करेगा, वो डायरेक्टली क्वेश्चन डेटाबेस में जाएगा, डेटाबेस डायरेक्टली उसको रिप्लाई करेगा, रिस्पॉन्स करेगा थ्रू द नेटवर्क। सो दिस इज द फंडा ऑफ योर 2-टायर आर्किटेक्चर एंड बेसिकली उसको क्या बोलते हैं, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। सो लेट्स सी उन्होंने क्या लिखा है। इन दिस काइंड ऑफ आर्किटेक्चर द जावा एप्लीकेशन इज डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग विथ योर डेटाबेस, राइट? सो एप्लीकेशन डायरेक्टली डेटाबेस से कम्युनिकेट करता है। It requires one of the specific Java database connectivity drivers to connect a specific database. Okay, so जो भी है database का connectivity करना है तो कौन सा properly driver चाहिए वो हम लोग उसको बताएंगे। All queries are request are sending by the user to the database and results are receiving back by the user only. Okay, so database can be running on the same machine. Also, it can be on remote machine and to be connected via a network. जैसे मैंने तुम लोग को बोला, right? So वो लोकल तुम लोग का जो सिस्टम है उसमें भी रह सकता है डेटाबेस, या तो फिर तुम लोग थ्रू द नेटवर्क वो फेच भी कर सकते हो अगर वो रिमोटली है तो। So that's why it is called, this approach is called client server architecture, right? It is very easy. सो अभी उन्होंने उसके बारे में और भी कुछ बताया है। इन अ 2-टायर मॉडल अ जावा एप्लेट और एप्लीकेशन टॉक्स डायरेक्टली टू द डेटा सोर्स, राइट? डेटा सोर्स डेटाबेस से डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है। दिस रिक्वायर्स JDBC ड्राइवर कैन कम्युनिकेट विद अ particular data source being accessed. A user's commands are delivered to the database or other data source, and the results of those statements are sent back to the user. घुमा फिरा के वही वही एक्सप्लेन किया हुआ है। द डेटा सोर्स मे बी लोकेटेड ऑन अनदर मशीन टू विच द यूजर is connected via network. This is referred to a client server configuration with the user's machine as the client and the machine housing the data source as the server, right? तुम लोग का जो डेटाबेस रहेगा वो डेटा सोर्स वो कहीं पे सर्वर पे लोकेटेड रह सकता है। सो द नेटवर्क कैन बी एन इंटरनेट which for example connects employees with a cooperation, or it can be the internet, सिंपल। बट अभी जो 3-टायर आर्किटेक्चर हम लोग जो बोल रहे हैं, ओके, सो 3-टायर आर्किटेक्चर में क्या होता है, वहां पे एक मिडलवेयर रहेगा, ओके। सो जो मिडलवेयर है उससे क्लाइंट कम्युनिकेट करेगा, क्लाइंट उसको
क्वेरी करेगा. ओके, सो यहाँ पे ये थर्ड पॉइंट वही लिखा था. ओके, इन द 3-tier model, commands are sent to a middle tier of services which then sends the commands to the data source. The data source processes the commands and then sends the result back to middle tier, which then sends them to the user. ओके, उन्होंने नीचे भी प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है. सी, फर्स्ट हम लोग डायग्राम देखते हैं. सो दिस इज योर 3-tier आर्किटेक्चर. सी, यहाँ पे क्या है? यूजर, एप्लीकेशन क्लाइंट, एप्लीकेशन सर्वर एंड डेटाबेस. सो बेसिकली दिस इज योर मिडलवेयर. जो एप्लीकेशन क्लाइंट और एप्लीकेशन सर्वर है ना, वो तुम लोग का मिडलवेयर है. यूजर क्या करता है? थ्रू द एप्लीकेशन सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा, क्वेरी करेगा. ओके, एप्लीकेशन सर्वर का काम क्या है? वो क्या करेगा? डेटाबेस से वो जो भी क्वेरी आया है उसे डेटा फेच करेगा एंड देन इट विल रिप्लाई टू द यूजर. सो दिस इज योर 3-tier आर्किटेक्चर. ओके, सो सी, in the 3-tier model, there is no direct communication. First of all the requests and queries are sent to the middle tier. A middle tier can be a browser with a web page or desktop application, right? वो application client है, application server वो वाला. Okay, that sends a request to the Java application. After that request is sent to database, the database process the request and sends the result back to middle tier only. And the middle tier then communicates with the user. This model has better performance and simplifies application deployment. Okay, and it is more secure, right? बिकॉज बीच में एप्लीकेशन आता है, वही सब कुछ हैंडल करता है डायरेक्टली. वो डेटाबेस को हम लोग उसको हार्म नहीं कर सकेंगे अगर कुछ भी कर रहा है कोई हैकर भी है तो, राइट? लाइक दैट. So all these different executable are able to access database with the use of the JDBC driver as a middle tier. So Java desktop application, Java applets, Java servlets, JSP, एंटरप्राइज जावा बीन्स, ये सब एग्जांपल दिए हुए हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज, ओके, सो नेक्स्ट देखो यहाँ पे, फॉर द 2-tier मॉडल एज वेल एज 3-tier मॉडल, जेडीबीसी हैज 2 मेन लेयर्स. कौन से मेन लेयर्स हैं? जेडीबीसी एपीआई fetch an application to JDBC manager connection. Okay, and JDBC driver API. ओके, एक तो JDBC API हो गया, वो क्या करेगा? एप्लीकेशन टू JDBC मैनेजर कनेक्शन. और ये क्या है? JDBC ड्राइवर API. वो क्या करेगा? दिस सपोर्ट्स द JDBC मैनेजर टू ड्राइवर कनेक्शन. हम लोग को 2 चीज चाहिए, एक तो ड्राइवर चाहिए और वो ड्राइवर को मैनेज करने के लिए मैनेजर कनेक्शन चाहिए, राइट? JDBC मैनेजर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट विच मैनेजेस द थिंग्स. कि कौन सा ड्राइवर यूज करना है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, लाइक दैट. वो डिसाइड ड्राइवर मैनेजर करता है. Okay, so you can see over here the JDBC driver manager and database specific drivers provide the possibility to connect the heterogeneous databases, right? The function of JDBC driver manager is to ensure that the correct driver is used to access each database. जो अलग अलग databases है उसमें से कौन सा correctly driver use करना है उसके लिए वो कौन decide करेगा? तुम लोग का JDBC driver manager. Okay, so driver manager is capable to support more than one driver and the drivers can be concurrently connected to multiple different data sources. ओके, सो तुम लोग अगर XML फाइल से भी डेटा ले रहे हो, ओके, प्रॉपर डेटाबेस से ले रहे हो या दूसरी कोई फाइल है उससे तुम लोग एक्सेल फाइल से भी डेटा ले सकते हो. तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा सोर्सेस. तो तुम लोग कौन सा ले रहे हो, कौन सा डेटा सोर्स ले रहे हो, डिपेंड ऑन दैट वो ड्राइवर सिलेक्ट करेगा. कौन? यूर ड्राइवर मैनेजर, राइट? सो दिस इज द थिंग. तो यहाँ पे और भी बताया उन्होंने, until recently a middle tier has
often been written in language such as C or C++, which offers fast performance. जो तुम लोग का 3-type architecture है वो, right? So with the introduction of optimizing compiler that translate Java bytecode into efficient machine specific code and technologies such as enterprise Java beans, the Java platform is fast becoming and standard platform for multi middle tier development. Okay, so this is big plus, making it possible to advantage of robustness, multi-threading, security features. So ये because of we are using जैसे मैं तुम लोग को बोला कि हम लोग 3-tier आर्किटेक्चर यूज करेंगे मिडल टायर वहां पे अगर रहेगा, सो इट इज मोर सिक्योर, राइट? हम लोग मल्टी थ्रेडिंग भी यूज कर सकते हैं. सो दीज आर द थिंग्स 3-tier architecture provides. Okay. So with enterprises increasingly using Java programming language for writing server code, okay, so this is very important. एंटरप्राइज जो भी ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली यूज करते हैं वो सर्वर कोड लिखने के लिए जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, एज वी नो वेरी वेल. सो और क्या है इसमें, या the JDBC API being used more and more in the middle tier of 3-tier architecture. Some of the features that make JDBC a server technology are its support for connecting, pooling, distributed transaction and disconnected row sets. JDBC API also what allows access to a data source from a Java middle tier. Okay, so जो तुम लोग का मिडल टायर बनाते हैं, सिर्फ 3 लेवल आर्किटेक्चर में क्या था, तुम लोग का एप्लीकेशन क्लाइंट और एप्लीकेशन सर्वर था. सो जो एप्लीकेशन क्लाइंट और एप्लीकेशन सर्वर मिडल टायर जो बना रहे हैं वो भी जावा कोड ही रहता है. ओके, वो भी जावा में ही डेवलप करते हैं इन शॉर्ट. तो यहाँ पे भी एक डायग्राम है, राइट? यहाँ पे सेम है, देखो एप्लीकेशन, वो जो भी तुम लोग ऐप बनाओगे, जावा सर्वलेट यूज करोगे, एपलेट यूज करोगे, जेएसपी जो भी तुम लोग को यूज करना है वो यूज करके एप्लीकेशन बनाओगे. देन तुम लोग का एपीआई आएगा. देन जावा का जो भी ड्राइवर मैनेजर है उसका रोल प्ले होगा. सो उसके बाद में तुम लोग को हम लोग ने देखा था कि वहां पे वो ड्राइवर मैनेजर सिलेक्ट करेगा कि तुम लोग का कौन सा टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 कौन सा ड्राइवर यूज करना है. सो दैट इज योर जेडीबीसी ड्राइवर्स, राइट? सो वो डिसाइड होगा एंड अकॉर्डिंगली तुम लोग के जो सर्वर है, कौन सा सर्वर यूज कर रहे हो, एसक्यूएल, ओरेकल या तो फिर माई एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, जो भी तुम लोग के सर्वर से डेटा सोर्स है वो यहाँ पे वो सिलेक्ट करेगा. सो दिस इज योर जेडीबीसी आर्किटेक्चर, राइट? इट इज वेरी सिंपल एक्चुअली. ये सब तुम लोग का बीएससी में हो चुका रहेगा. So see this diagram, JDBC, तुम लोग यहाँ पे देखो डायग्राम रिप्रेजेंट आर्किटेक्चर ऑफ जेडीबीसी. सो फर्स्ट सिंपली यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जेडीबीसी क्लाइंट, जेडीबीसी एपीआई, ड्राइवर मैनेजर, JDBC driver, and lastly your database. So how they communicate? JDBC client क्या करेगा, वो API n टाइम्स यूज करे, बार 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 वो API को ही टच करेगा. ओके, अदरवाइज वो दूसरा चीज क्या कर रहा है, देखो यहाँ से कम्युनिकेशन n नंबर ऑफ टाइम्स विथ योर JDBC ड्राइवर, जो भी तुम लोग का ड्राइवर है, ओके, उससे वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा एंड देन JDBC ड्राइवर विल कम्युनिकेट विथ योर एक्चुअल डेटाबेस. डेटाबेस मतलब तुम लोग का जो सर्वर है वो, ओके, उससे. देन और क्या हो रहा है, ड्राइवर मैनेजर कनेक्टेड है टू योर JDBC ड्राइवर एज वेल एज. यहाँ पे भी ये नोटिस करो कि क्लाइंट ड्राइवर मैनेजर से भी कम्युनिकेट कर रहा है बट ओनली वंस. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है. लेट्स सी, लेट्स चेक ये जो सारे पॉइंट्स है वन बाय वन. ओके, सो फर्स्ट उन्होंने क्या बोला है, सी फर्स्ट कंपोनेंट इज व्हाट, JDBC client.
So here JDBC client is nothing but a Java application, right, which wants to communicate with the database. So इसलिए वो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो डायरेक्टली जो क्लाइंट है वो क्या तुम लोग का एप्लीकेशन है, राइट. देन उसके बाद में कौन आता है, JDBC API to write a Java program which communicates with any database without changing the code. Sun Microsystem has released JDBC API. By JDBC API implementation, we can call JDBC driver, right? उसके बाद में आएगा JDBC driver. Driver में क्या है? It is a Java application, right? That acts as an interface between Java application and your database. So if understand the given Java calls and converts into database call and vice versa. See, इसलिए यहाँ पे ये n नंबर ऑफ टाइम्स लिखा है. क्यों? जो भी क्लाइंट क्वेरी करेगा वो जाएगा जावा ड्राइवर JDBC ड्राइवर के पास. ओके, देन इससे वो डायरेक्टली फिर से क्लाइंट को ही रिप्लाई भी करेगा. ओके, that's why it is n number of times. Okay, interface between Java application and database. If understand the given Java calls and converts it into database calls and vice versa. Then JDBC driver manager, it acts as a data structure that collects group of JDBC drivers. Okay, and allows the programmer to select the driver dynamically for the database connection. Database से connection करने के लिए वो देखेगा, right? एक क्वेश्चन आया था, इस 3-tier आर्किटेक्चर इज स्ट्रांगली टाइप्ड इन जावा. या बिकॉज वो एंटरप्राइज लेवल का है ना, इसलिए वो वैसे मोस्टली जावा में ही डेवलप करते हैं, राइट. कमिंग बैक, लास्टली क्या रह गया, योर डेटाबेस सर्वर. जैसे मैंने तुम लोग को बोला, तुम लोग अलग अलग सर्वर यूज कर सकते हो. इट इज नथिंग बट द डेटाबेस सर्वर लाइक ओरेकल, MySQL, SQL सर्वर, right? So which the JDBC client wants to communicate simply. Okay, so lastly your DML operation. Okay, data manipulation language. DML मतलब DML stands for your manipulation language. उसमें क्या आता है, insert, update, delete, ये वाले क्वेरीज आते हैं. जैसे तुम लोग को मैंने बोला था, अगर हम लोग सिलेक्ट क्वेरी कर रहे हैं मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल ये आता है, तो हम लोग एग्जीक्यूट क्वेरी वो वाला मेथड यूज करते हैं. पर अगर हम लोग DML स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगे तो वहां पे आता है 1 row इंसर्टेड, 2 rows अपडेटेड, 3 rows डिलीटेड, राइट. सो सिर्फ वो नंबर आता है 1 2 3 लाइक दैट. सो उसके लिए हम लोग को कौन सा मेथड यूज करना है, एग्जीक्यूट अपडेट मेथड यूज करते हैं फॉर योर DML queries, right? So data manipulation language provides statements like selecting, inserting, deleting, updating data in a database. So component of DML includes performing read-only queries of data. SQL is also known as DML or data manipulation language, as it use retrieve any manipulate data in a relational database, right? So execute update is used to perform as data manipulation language. It is used to modify stored data, but not the scheme or database objects. Okay. So manipulation takes place in form of persistent database objects, example tables, or stored procedures via SQL schemas statement rather than data stored within them. So उन्होंने अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है इंसर्ट का. ओके, सो बेसिकली अभी अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, SQL कनेक्शन, SQL ड्राइवर मैनेजर, ये सब तुम लोग को लगने वाला है. सो इसलिए उन्होंने इंपोर्ट किए हैं वो स्टेटमेंट्स, राइट, ये वाले. उसके बाद में क्या किया है, ऑफ कोर्स वो SQL एक्सेप्शन भी थ्रो कर सकता है. हम लोग वो ट्राई कैश ब्लॉक में डालेंगे, इसलिए
एसक्यूएल एक्सेप्शन भी उन्होंने इंपोर्ट किया है। ओके, सो दिस इज योर क्लास स्टेटमेंट इंसर्ट एग्जाम्पल। ओके, उसके अंदर मेन में सी यहाँ पे कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बना है, कौन स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाया है। ओके, सिर्फ ऑब्जेक्ट बना के रखा है, नल उसको वैल्यू है। सो अभी मेन टास्क will start over here in your try block, right? So first हम लोग ने देखा था 5 steps, right? 5 step में से first registration. So register करने के लिए कौन सा मेथड था? class dot for name, right? So यहाँ पे हम लोग ने register किया है कि we are going to use oracle dot jdbc dot driver oracle driver. So ये हम लोग ने उसको बता दिया, रजिस्टर किया। Second step is what? Connection. That time we need what? Get connection from your driver manager class. So connection का ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या पास करेंगे? ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन मेथड से हम लोग उसको फर्स्ट यूआरएल पास करें कि हाँ हम लोग ये यूआरएल उसको देंगे। उसके बाद में दिस इज योर यूजर नेम एंड दिस इज योर पासवर्ड फॉर योर ओरेकल सर्वर, राइट। उसके बाद में ये हो गया, उसने जस्ट यहाँ पे एक एसओपी में मैसेज डाल दिया कि हाँ कनेक्शन एस्टैब्लिश करके, नो नीड। ओके, पर एक इंफॉर्मेशन यूजर को। तो ये 2 स्टेप हो गए। थर्ड स्टेप इज व्हाट? स्टेटमेंट क्रिएट करना। सो फॉर दैट वी नो क्रिएट स्टेटमेंट क्वेरी, सॉरी मेथड, राइट। सो हम लोग वो एचटीएमटी जो ऑब्जेक्ट है स्टेटमेंट का, उसको हम लोग ने वो पास किया थ्रू द कनेक्शन ऑब्जेक्ट, connection object dot create statement. Now the important चीज execute करना है हम लोग को क्वेरी को। So for that insert query हम लोग को लिखना पड़ेगा। So that insert query is over here. So उन्होंने क्या किया है? सी जैसे मैंने तुम लोग को बोला कि वो नंबर रिटर्न करता है। That's why they create one variable which is integer type. Okay. HTML statement create statement का जो ऑब्जेक्ट है उसको यूज करके हम लोग this time using मेथड नेम एग्जीक्यूट अपडेट, राइट। सो एग्जीक्यूट अपडेट क्या करेगा? उसके अंदर हम लोग को प्रॉपरली जो क्वेरी है वो लिखना है इंसर्ट का। तो सिंपल तुम लोग का जो भी इंसर्ट का है, अपडेट का है या तो फिर डिलीट का जो भी क्वेरी है विच विल गोज ओवर हियर। ओके, सो डबल कोड में उन्होंने वो प्रॉपरली इंसर्ट का क्वेरी लिखा है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय इज माय टेबल नेम। ओके, उन्होंने यहाँ पे 2 कॉलम्स मेंशन किए कि कौन से कॉलम में मुझे डेटा डालना है। So they are providing ID and name, 2 columns, right? Then values is a keyword, and then they are providing actual value. So ID is your number. So इसलिए उन्होंने directly 1 दिया है, and then this is Nikita, वो single code में दिया है because it is a varchar simply। इसके बाद में डबल कोड कंप्लीट करके ये पूरा इंसर्ट का क्वेरी कंप्लीट किया, right? This is basic. I hope you all know this. ओके, उसके बाद में उन्होंने क्या किया है? एसओपी में जस्ट नंबर ऑफ रोज इंसर्टेड, और जो इसका आउटपुट आएगा यहाँ 1 रो इंसर्टेड करके, सो वो वैसे नंबर ऑफ रोज इंसर्टेड इज इक्वल टू 1। ओके, जो ये वेरिएबल में जितने भी रोज अभी इन दिस केस ओनली 1 रो इज इंसर्टेड, सो वहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। अगर इन केस यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो क्या करेगा? इट विल गोज टू कैश, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, या तो फिर एसक्यूएल का कुछ एक्सेप्शन है तो वो आएगा। सो दीज आर द मल्टीपल कैश, राइट। सो ट्राई कैश तुम लोग को मालूम है, वी कैन यूज मल्टीपल कैच आल्सो। एंड द फाइनली सी, फाइनली का यूज यही है, मैं मोस्टली यही बोलती थी क्योंकि क्या है, कनेक्शन अगर ओपन रह गया तो एनीवन कैन हैक दैट डेटाबेस, राइट। सो अगर तुम लोग का प्रॉपरली प्रोग्राम कोड एग्जीक्यूट हो रहा है और उसके बाद में क्लोज कर रहे हो कनेक्शन, वेल एंड गुड। और अगर नहीं हो रहा है सो वी हैव टू क्लोज दैट कनेक्शन इमीडिएटली। सो इसलिए फाइनली ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूट। तो उसमें क्या किया है देखो उन्होंने, इफ स्टेटमेंट नल है तो स्टेटमेंट क्लोज कर देंगे, कनेक्शन नल है तो कनेक्शन भी क्लोज कर देंगे। तो बाकी कुछ नहीं, क्लोजिंग स्टेटमेंट किए हुए हैं, क्लोज स्टेटमेंट एंड क्लोज कनेक्शन। Last your 5th step, right? So like this हम लोग का ये भी
चैप्टर कंप्लीट हुआ। सो इसमें कुछ नहीं था, आर्किटेक्चर था, राइट, जेडीबीसी का, एंड डीएमएल ऑपरेशंस हम लोग कैसे कर सकते हैं यूजिंग जेडीबीसी, वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ था। सो दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर। एनी डाउट इन 9th चैप्टर? ये सब तुम लोग को बीएससी में हो चुका है आई गेस। किसी को कुछ पूछना है? It is very easy. So let's move further. That is your 10th chapter. ओके, अभी हम लोग के 2 ही चैप्टर्स बाकी है, 10th एंड 11th। लेट्स सी आज कितना कंप्लीट होता है। मोस्टली वी विल ट्राई कि 10th वाला कंप्लीट करें। सो नेक्स्ट इज योर स्प्रिंग, गेटिंग स्टार्टेड विथ स्प्रिंग बूट। ओके, सो उसके बूट के बेनिफिट्स क्या है, ओके, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एक्चुअली स्प्रिंग बूट होता क्या है, वो भी हम लोग देखते हैं। किसी को कुछ आइडिया है अबाउट स्प्रिंग बूट? यू कैन रीड ऑब्जेक्टिव्स, तो थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा कि स्प्रिंग बूट होता क्या है। ठीक है फाइन, अगर तुम लोग को कुछ एप्लीकेशन बनाने के लिए किसी ने बोला, तो तुम लोग एकदम स्क्रैच से कोड करोगे, या तो फिर तुम लोग क्या करोगे, कुछ पैकेजेस या कुछ लाइब्रेरीज जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसको जस्ट यूज करोगे, एंड तुम लोग अपना जो एप्लीकेशन है वो रन करोगे, राइट। तो सेम थिंग, अगर तुम लोग स्प्रिंग बूट यूज कर रहे हो, सो यू आर डूइंग द सेम थिंग कि तुम लोग जो ऑलरेडी कुछ फंक्शनैलिटी है, फीचर्स है जो तुम लोग को चाहिए, वो तुम लोग ऑलरेडी जो बनाया हुआ है उसको ही यूज करके जस्ट तुम लोग का जो स्पीड अप कर सकते हो तुम लोग का एप्लीकेशन का। सो बेसिकली यहाँ पे देखो ऑब्जेक्टिव्स में लिखा है टू प्रोवाइड अ रेडिकली फास्टर एंड वाइडली एक्सेसिबल गेटिंग स्टार्टेड एक्सपीरियंस फॉर ऑल स्प्रिंग डेवलपमेंट। स्प्रिंग डेवलपमेंट को फास्टर बूस्ट करने के लिए, राइट। सो टू बी opinionated out of the box but get off the way quickly as requirements start. Okay, fine. We will start with the introduction. Okay. See, Spring Boot makes it easy to create standalone production grade Spring based application that you can just run. Okay, we take an optimization view of the Spring platform and third party libraries. Okay, so you can get started with minimum cost. Most Spring Boot application need minimal Spring configuration. जस्ट यूज करना है, जैसे कुछ लाइब्रेरीज वगैरह जो रहेंगे उसको हम लोग को जस्ट यूज करना है। तो स्प्रिंग बूट इज एन ओपन सोर्स माइक्रो सर्विस बेस्ड जावा वेब फ्रेमवर्क। ठीक ओपन सोर्स है। So the Spring Boot framework creates fully production ready environment that is completely configurable using its pre-built code within its code base. Okay, the microservice architecture provides developers with a fully enclosed application, including embedded application servers. So basically, मैं फिर से बोलूंगी कि क्या है, अगर तुम लोग को तुम लोग स्प्रिंग डेवलपमेंट कर रहे हो, सो उसमें स्प्रिंग बूट के जो लाइब्रेरीज और जो भी कुछ है वो यूज कर सकते हो, और डायरेक्टली तुम लोग वो रन कर सकते हो, ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं रहता उसमें। ओके, सो इट इज वेरी फास्ट। ओके, सो Spring Boot is just extension of the already existing and expensive Spring frameworks, but it has some specific features that make the application easier for working within the
develop developer ecosystems. So that extension includes pre-configurable web starters kits that helps facilitate the responsibility of an application server that are required for the Spring projects. Okay, so उसके benefits दिए हुए हैं, Spring Boot benefits. Spring Boot has a number of features that make the great fit for quickly developing Java application, including auto configuration, health check, and optimated opinionated dependencies. Okay, so first standalone application. Standalone application मतलब क्या? Then simply build the application jar and run the application with no need to customize the deployment, right? Just jar file create hoga, right? So that is called your standalone application. And what is embedded servers? Comes with pre-built Tomcat, Jetty, and Undertow application servers. Okay, that do not require further installation to use. Just हम लोग को वो फिर से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है. These also provide faster, more efficient deployments, resulting to shorting restart times. Right? हम लोग boot करते हैं मतलब क्या करते हैं वही होता है ना कि फास्टली वो रिस्टार्ट होता है सिस्टम. The same thing over here. Okay? Auto-configurable. Spring and other third-party frameworks will be configured automatically, right? So configuration करने के लिए भी time नहीं जाएगा. Okay. Production like features, health checks, metrics, externalized configuration, ये सब उसमें आ जाएगा. Starter dependency, this will provide opinionated dependencies designed to simplify the build configuration. This is also provide complete build tool flexibility, right? So these are the features of your Spring Boot. So यहाँ पे एक difference दिया हुआ है. What is the difference between Spring Boot and Spring MVC? So what is MVC? Model View Controller, right? So the major difference between Spring Boot and MVC come down to difference between context and overall scale. So Spring MVC is specific Spring-based web framework in a traditional sense. That means it requires manual build configuration, right? So यहाँ पे manual रहेगा. Specifying dependencies separately and the use of application server. Spring Boot क्या करेगा? On the other hand, is more like model Spring designed to package, right? Spring applications or frameworks with automation and default. So जैसे हम लोग ने देखा कि सब क्या हो रहा है, configuration जो हो रहा है वो by default हो रहा है. Just we have to add that library, add that package, and all things are done. So वो Spring Boot का benefit ही है. So in the theory, in the code, one could have Spring MVC project package as a Spring Boot application. Both can be classified as a Spring framework. However, the scale of Spring Boot encompass many types of Spring framework, while Spring MVC, on the other hand, specifies the design of the framework. Okay. Just a minute.
Okay, so now we are going to start with the Spring Boot starters. Okay, so of course we know कि वो फास्ट स्टार्ट करने के लिए रीस्टार्ट करने के लिए यूज होता है राइट. सो वो इसलिए हम लोग उसके जो स्टार्टर्स है वो देखते हैं वन बाय वन. So first is Spring Boot starter were built to address exactly this problem. Starter POMs are a set of convenient dependency descriptor that you can include in your application. You can get one-stop shop for all the Spring and related technology that you need without having to hunt the simple code or copy paste load of dependency descriptor. कोड ढूंढने की यहाँ वहाँ कुछ डिपेंडेंसी डिस्क्रिप्टर्स ढूंढने की वगैरह जरूरत नहीं है. सब वहां पे ही तुम लोग को मिल जाएगा. सो फर्स्ट इज योर वेब स्टार्टर. First, let's look at the developing REST REST service. We can use libraries like Spring MVC, Tomcat, Jackson, a lot of dependencies for a single application. Spring Boot starters can help to reduce the number of manual add dependencies just by the adding the one dependency. So see, this is the code. ओके. डिपेंडेंसी उसने स्टार्ट किया, उसमें ग्रुप आईडी आणि आर्टिफैक्ट आईडी जो है वो उन्होंने जस्ट मेंशन किया कि ग्रुप आईडी क्या है. दिस इज योर org.springframework.boot. दिस इज योर आईडी and this is your artifact id. Spring dash boot starter web. Okay, we are going to use web starter na, that's why it is starter web simply, right? And dependency close kiya, right? So simple. Now the next, that is your test starter. तो इसमें क्या है? For testing we usually use the following set of libraries: Spring Test, JUnit. Okay, so ये testing के लिए use होते हैं. We can include all of these libraries manually, but Spring Boot starter can be used automatically. Include these libraries in the following way. So उन्होंने क्या किया? Just बताया है कि कौन सी आईडी है. ओके, सो दिस टाइम इट इज स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट बूट ग्रुप आईडी. ओके, देन आर्टिफैक्ट आईडी में क्या बताया कि हम लोग स्टार्टर जो है बूट स्टार्टर टेस्ट वो यूज कर रहे हैं, राइट. सो वो हम लोग ने मेंशन किया एंड उसका स्कोप बताया कि हाँ टेस्टिंग के लिए हो रहा है, तो स्कोप इज टेस्ट. सिंपल. Notice that you don't need to specify the version number of artifact. Spring Boot will figure out what the version to use. All you need to specify is the version of Spring Boot starter parent artifact. If later on you need to upgrade the boot library and dependencies, just upgrade the boot version in one place. It will take care of the rest. So हम लोग यहाँ पे version नहीं mention करें, so it will, अगर तुम लोग ने अपग्रेड भी कर दिया, so it will take care itself only, right? So this is the thing. Okay, so there are two ways to test the controller using the mock environment, right? मतलब एक fake environment, mock environment, using the embedded servlet container like Tomcat or Jetty. Okay, so the data JPA starter, next one. वे उन्होंने जो ये बताया जस्ट तुम लोग के इंफॉर्मेशन के लिए बताया कि वो कहाँ पे भी हम लोग टेस्ट कर सकते हैं. ओके, नाउ द थर्ड इज योर डेटा जेपीए स्टार्टर. So most web application have some sort of persistent that I often JPA instead of defining all the associated dependencies manually. Let's go with the starter instead. Okay, तो ये JPA का स्टार्टर है. ओके, यहाँ पे देखो डिपेंडेंसीज के अंदर उन्होंने ग्रुप आईडी आर्टिफैक्ट मेंशन किया है कि वी आर गोइंग टू यूज ऑफकोर्स स्प्रिंग फ्रेमवर्क बूट, बट कौन सा वाला? स्टार्टर डॉट डेटा, राइट. डेटा जीपीए हम लोग यूज करें ना, इसलिए उन्होंने वो मेंशन किया है. और यहाँ पे देखो क्या किया है, डिपेंडेंसीज क्लोज किया है, सेकेंड डिपेंडेंसी स्टार्ट किया है,
और वहाँ पे उन्होंने बताया है कि हम लोग डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं। ओके? समझ में आ रहा है क्या? और यहाँ पे हम लोग उसको आर्टिफैक्ट में H2 बता रहे हैं, दैट इज़ हम लोग का जो डेटाबेस का नेम है, दैट इज़ H2 डेटाबेस, उसका नाम रहेगा। ओके? सो वी आर मेंशनिंग दैट एंड कब उसका होगा वो एग्ज़ीक्यूट? रन टाइम पे। सो वो स्कोप उसने बताया है सिंपली, राइट? सो जो भी तुम लोग का डेटा है, वो डेटा पे हम लोग काम कर रहे हैं, राइट? सो इसलिए दैट्स व्हाई वो डेटाबेस को अ, ग्रुप आईडी बना रहा है, राइट? So this is thing. Notice that out of the box we have automatic support for the least of the following databases, that is H2 DB and HSQ LDB. Okay. Then मेल स्टार्टर, अगर तुम लोग को मेल स्टार्टर यूज करना है तो उसके लिए भी है। अ वेरी कॉमन टास्क टू एंटरप्राइज डेवलपमेंट is sending email and dealing directly with Java Mail API usually can be difficult. So Spring Boot starter hides this complexity. Mail dependencies can be specified in the following way. So C Spring Boot हम फ्रेमवर्क बूट हम लोग ने यूज किया आईडी, और यहाँ पे हम लोग ने मेंशन किया है boot starter mail, right? Simple. And then dependencies close किए। तो उन्होंने अभी उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताया कि स्प्रिंग बूट के क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है। सिंपल, स्प्रिंग फ्रेमवर्क कैन बी एम्प्लॉयड ऑन all architectural layers used in the development of web application. Okay, use a very lightweight POJO model when writing classes. Right, POJO model हमने already देखा है। Always you to freely link modules and easily test them. Supports declarative programming. Eliminates the need of independently create factory and singleton classes. Support various configuration methods. Provide middleware level service. So these are the Spring Boot के advantage. Disadvantage क्या है? Spring Boot many may include dependencies that are not used, thereby causing huge development file size. So ये भी हो सकता है कि तुम लोग dependencies add कर रहे हो but you are not using that thing. So ये भी एक हो सकता है, अगर तुम लोग टेस्ट ही नहीं कर रहे हो बट तुम लोग टेस्ट का अगर dependencies यूज कर रहे हो, so वो फाइल साइज अननेसेसरी बढ़ जाएगा। ऐसे भी हो सकता है, बहुत सारे तुम लोग के dependencies है, राइट? वैसे so turning legacy Spring applications into Spring Boot requires a lot of efforts and a time-consuming process. Limited control of your application. So now they are started the thing which says Spring Boot and your database. Okay, Spring Boot क्यों यूज होता है? हाँ, of course Spring की जो web applications है वो develop करने के लिए we use Spring Boot. Fine. Now that will use your database also. So database के साथ में क्या कर सकते हैं? So Spring Boot JDBC provides starter and libraries for connecting an application with your JDBC. Okay? अभी तक हम लोग ने क्या किया था? Just JDBC and Spring use हो रहा था। अभी Spring Boot with your database is going to start. Okay? So JDBC connection pooling. Connection pooling is a mechanism to create and maintain a collection of JDBC connection objects. Simple. The primary objective of maintaining the pool of connection object is leverage, reusability. Okay. A new connection object is created only when there are no connection objects available to reuse. सिंपली अगर कोई न्यू कनेक्शन बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, वो फर्स्ट चेक करेगा ऑलरेडी है क्या ऑब्जेक्ट, अगर नहीं है तो ही बनाएगा ना, वही लिखा है। सो दिस टेक्निक्स कैन इम्प्रूव ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द एप्लीकेशन। दिस आर्टिकल इज विल ट्राई टू शो हाउ दिस पूलिंग मैकेनिज्म कैन बी। ओके फाइन। सो सी दिस डायग्राम, और क्या समझ में आ रहा है जस्ट देखो।
JDBC एप्लीकेशन है यहाँ पे, JDBC ड्राइवर यहाँ पे है, एप्लीकेशन सर्वर है, हाउ दे आर कम्युनिकेटिंग। ओके, हम लोग ने जस्ट अभी देखा था प्रीवियस चैप्टर में भी कि हम लोग को अगर सिलेक्ट क्वेरी करनी है या कोई वेरिएबल स्टेटमेंट्स करने हैं, तो हम लोग को कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, राइट? और उसके बाद में हम लोग को वो सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, रजिस्टर, कनेक्शन, क्रिएट स्टेटमेंट्स एंड ऑल। हर टाइम पे हम लोग को कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ रहा था, राइट? सो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, मेमोरी स्पेस अलोकेट होगा, इट विल टेक योर मेमोरी, उसका परफॉर्मेंस भी स्लो हो जाएगा। सो यहाँ पे देखो, जो भी तुम लोग का कनेक्शन का ऑब्जेक्ट्स है, वो बार-बार क्रिएट नहीं होगा, सो वो रिड्यूस हो जाएगा, तो तुम लोग का एप्लीकेशन वैसे ही भी फास्टली वर्कआउट करेगा। सो सी, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। JDBC एप्लीकेशन है, database server API, okay? Through this API, it will connect to your application server, okay? Then connection pull this data source API, वो क्या करेगा, हम लोग के JDBC ड्राइवर को के पास जाएगा, और JDBC ड्राइवर से वो डेटाबेस से जो भी तुम लोग का डेटा चाहिए वो पुल करेगा, फिजिकल पुल कनेक्शन ऑब्जेक्ट, ओके? और वो फिर से तुम लोग के एप्लीकेशन सर्वर में आएगा। देन लॉजिकल कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो फिर से वो जो भी आउटपुट का लॉजिकल ऑब्जेक्ट रहेगा वो उसको वो फिर से आउटपुट JDBC एप्लीकेशन को रिटर्न करेगा। बट इन ऑल दिस थिंग्स द मेन पार्ट इज ओवर हियर इन द सर्कल, कैश ऑफ पुल कनेक्शन ऑब्जेक्ट्स, ओके? अगर तुम लोग कोई एक क्वेरी बार बार एग्जीक्यूट कर रहे हो, सो दैट इज वो क्या करेगा, वो जो ऑब्जेक्ट है उसको कैश करके रखेगा, पुल, कैश ऑफ पुल कनेक्शन ऑब्जेक्ट्स इन योर एप्लीकेशन सर्वर। सो उसको बार बार JDBC ड्राइवर के पास में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सो इट विल बिकम मोर फास्टर, राइट? सो सी, diagram represents structure of JDBC connection pooling. It increases the speed of data access and reduce the number of database connection for an application, एक particular application के लिए जो हम लोग ने बनाया है। It also improves the performance of an application. Connection pull performance the following task: मैनेज अवेलेबल कनेक्शन, कि ऑलरेडी कुछ कनेक्शन बनाया है क्या, ओके फाइन, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बनाया हुआ है, सो वो मैनेज करेगा। अगर नहीं है तो अलोकेट न्यू कनेक्शन, ओके? और अगर उसका काम हो गया है, मतलब कोई मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है बट वो मतलब यूज नहीं हो रहा है, सो दे विल क्लोज दैट कनेक्शन ऑल्सो, राइट? सो दीज आर द मेन थिंग, राइट? सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस। So why do we need connection pooling? Okay, so establishing a database connection is very resource intensive process and involves lot of overhead. Moreover, in a multi-threaded environment, opening and closing a connection can worsen the situation greatly. To get the glimpse of what actually may happen with each request for creating new database connection, consider the following points. Database connections are established using driver manager and data source objects. So these two objects are very important. Then an application invokes the get connection method, JDBC driver request to JVM socket. Okay, so JVM has to ensure that all the calls does not violate security aspects. So वो Java virtual machine उसका वो काम है वो देख लेगा, right? So these are the things.
Then the invocation may have to percolate through a firewall before getting into a network cloud. On reaching the host, the server processes the connection request. Okay, ठीक है. फिर बाद में क्या इम्पोर्टेंट है? ओके, जो मैंने एक्सप्लेन किया वही सारे स्टेप्स उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं कि डेटाबेस सर्वर इनिशियलाइज द कनेक्शन ऑब्जेक्ट and return back to the JDBC client, again going through the same process, and finally we get the connection object. This is just overview. Okay. Yeah, last देखो यहाँ पे the complexity of the concept of connection pooling gets nastier as we dive deep into it, but thanks go to the people who work to produce libraries specifically for the cause of connection pooling. So उन्होंने just बोला कि हाँ जो भी already libraries बना के रखा है connection pooling के लिए, तो उसको just वो library को use करके, so these libraries added to the norms of JDBC to provide simpler APIs to actually implement them in a Java application. So just हम लोग को क्या करना है, libraries use करना है. So we will implement the whole thing. तो को full कुछ करने की जरूरत नहीं है. So now Spring Boot web application development. हम लोग ने देखा Spring Boot with JDBC. ओके, सो अभी वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट का क्या है, तो जस्ट रीड इट, क्या बताया है उन्होंने. ओके, सो क्या बताया है देखो. डिस्पाइट द एडवांटेजेस ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क, ऑथर्स डिसाइड टू प्रोवाइड डेवलपर्स विद सम utilities that automate the configuration procedure automation वो डालने के लिए, and speed up the process of creating and deploying स्प्रिंग एप्लीकेशन. सिंपल उसका वो फीचर वही है, उसका बेनिफिट वही है, राइट. सो दिस यूटिलिटीज वेर कंबाइंड under the general name of Spring Boot. While the Spring framework focus on providing flexibility, Spring Boot seeks to reduce code length and simplify web application development by leveraging annotation and boilerplate configuration. Spring Boot reduces the time it takes to develop application. This capability helps you create standalone application with less or almost no configuration overhead. राइट, वही सब चीजें रिपीट किया हुआ है. तो अभी उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है हाउ टू कॉन्फ़िगर अ स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन टू कनेक्ट MySQL database server in two common scenarios. Okay, so a Spring Boot console application with Spring JDBC template, a Spring web application with Spring Data, JPA and Hibernate framework. Okay, so basically in order to make connection to a MySQL server, you can need to do following steps. और मैंने अभी यहाँ पे कुछ steps दिए हुए हैं. Okay, so first they are saying declare a dependency for MySQL JDBC driver because we are going to use server, MySQL server. Then which enables Java application to communicate with MySQL server. Declare a dependency for Spring JDBC और Spring Data JPA जो हम लोग ने देखा था ना, वैसे Data JPA वो वाला.
Then specify data source properties for the database connection information. In case of Spring JDBC, use JDBC template API for executing SQL statement against the database. So, and yeah, अगर Spring database data JPA use करना है, you need to create entity class, repository interface, and then use the Spring Data JPA API. तुम लोग का जावा का सिर्फ आई गेस 3 प्रैक्टिकल्स हुआ है ना? तो सर ने कुछ बोला क्या दिस संडे कि क्या होगा प्रैक्टिकल्स वगैरह कुछ आइडिया दिया है? तुम लोग सो गए क्या? जस्ट रिप्लाई मी। प्रैक्टिकल्स के बारे में कुछ आइडिया दिया है जावा की? नो मैम। ओके फाइन। एनीवेज उन्होंने अभी यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है जो हम लोग ने जस्ट अभी स्टेप्स देखे वही उसके ही है कि हाउ टू डिक्लेयर डिपेंडेंसीज फॉर मायस्क्यूएल। सो देखो यहाँ पे डिपेंडेंसी ग्रुप आईडी मायस्क्यूएल कनेक्टर जावा। तो अब उसका स्कोप क्या है? रन टाइम। सो दिस इज दे हैव क्रिएटेड डिपेंडेंसी फॉर डिक्लेयरिंग, जस्ट डिक्लेयर किया है कि वी आर गोइंग टू यूज मायस्क्यूएल, राइट? ये सर्वर यूज कर रहे हैं ऐसे। इसके बाद में सेकेंड इज व्हाट? स्पेसिफाइड डेटा सोर्स प्रॉपर्टीज। ओके, सो डेटा सोर्स की प्रॉपर्टीज में हम लोग को पता है हम लोग को क्या करना पड़ता है, यूआरएल देना पड़ता है, यूजर नेम एंड पासवर्ड देना पड़ता है। सो सेम थिंग देखो, नेक्स्ट यू नीड टू स्पेसिफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इन द स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन फाइल। सो स्प्रिंग डेटा सोर्स यूआरएल डेटा सोर्स यूजर नेम एंड पासवर्ड उन्होंने मेंशन किया हुआ है। सो जस्ट तुम लोग को अगर इनकेस कभी चेंज करना है, अपडेट करना है, सिर्फ यहाँ पे आके डिपेंडेंसीज में तुम लोग को चेंज करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। देन कनेक्शन के लिए अगेन सी स्टार्ट कनेक्ट, राइट? हम लोग को पुलिंग करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई स्प्रिंग जेडीबीसी प्रोवाइड्स अ सिंपल एपीआई ऑन अ टॉप ऑफ जेडीबीसी, that is the JDBC template, which you can use in a simple case. Example, executing plain SQL statement, you need to declare a following dependency. तो यहाँ पे उन्होंने जस्ट डिपेंडेंसी का ग्रुप आईडी स्टार्ट किया है फ्रेमवर्क बूट, और यहाँ पे हम लोग ने बताया वो जो स्टार्ट वाला था बूट स्टार्टर। ओके, एंड वी आर सेइंग कि वी आर गोइंग टू यूज JDBC बूट स्टार्टर JDBC, दैट्स इट। ओके, तो इसके बाद कनेक्ट टू MySQL विथ स्प्रिंग डेटा JPA। ओके, सो यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा था ऑलरेडी ये कोड डिपेंडेंसीज का, हम लोग को जस्ट बताना पड़ेगा कि स्टार्टर डेटा JPA हम लोग को चाहिए करके डिपेंडेंसीज ये यूज करना है, राइट? सो उन्होंने वही यूज किया है। एंड देन जस्ट अभी यहाँ पे डेटा सोर्स प्रॉपर्टीज बिफोर यूआरएल यूजर, ओके फाइन। सो यहाँ पे उन्होंने अभी ये कोड में क्या किया है देखो, स्प्रिंग डेटा सोर्स ड्राइवर क्लास नेम, और हम लोग ने यहाँ पे कौन सा ड्राइवर यूज होगा वो मेंशन किया है, JDBC। ओके, MySQL JDBC ड्राइवर। ओके, देन हाइबरनेट DDL ऑटो इज इक्वल्स टू अपडेट, हम लोग अपडेट कर रहे हैं। ओके, देन शो SQL ट्रू, SQL करेंगे, हाइबरनेट फॉर्मेट SQL ट्रू। सो ये तुम लोग को प्रॉपर्टीज और शो जो ये मेथड्स है JPA के, देखो स्प्रिंग डॉट JPA, राइट? सो उसको तुम लोग को प्रॉपरली मेंशन करना पड़ेगा, राइट? दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ योर MySQL। ओके, सो वो तुम लोग को मेंशन करने पड़ेंगे। देन see, then you need to code an entity class that maps the table in a database. For example, like this, जो भी तुम लोग का टेबल है, ओके, सो एट एंटिटी एट टेबल नेम में उन्होंने मेंशन किया है यूजर्स का टेबल है। ओके, सो यूजर के टेबल में कौन सा है, आईडी है, ओके, जनरेटेड वैल्यू, ओके, आईडी, ईमेल एंड पासवर्ड।
ओके, सो लाइक दिस उन्होंने क्या किया है देखो, एक तो उन्होंने जो आईडी है वो ले रहे हैं, जनरेटेड वैल्यू है उसको हम लोग क्या करें देखो, स्ट्रेटजी जनरेशन टाइप आइडेंटिटी, मतलब वो आइडेंटिटी करने के लिए हम लोग यूजर को वो यूज करने वाले हैं इन द कोड। सो इसलिए वहां पे वो जनरेशन टाइप प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है, एंड दीज आर योर प्राइवेट वेरिएबल्स। ओके, सो उसको हम लोग बाद में वैल्यूज देंगे गेट और सेट मेथड्स थ्रू, राइट। जस्ट अ मिनट। ओके फाइन, अभी यहाँ पे देखो उन्होंने ये इंपोर्ट किया हुआ है जेपीए रिपोजिटरी, राइट। सो जस्ट तुम लोग को क्या करना है, जो लाइब्रेरी है, ओके, वो जस्ट तुम लोग क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो। ओके, उसके अंदर उसके बाद में जो यूजर रिपोजिटरी है हम लोग वो इंटरफेस यूज करें, पब्लिक इंटरफेस क्रिएट करें यूजर रिपोजिटरी विच विल गोइंग टू एक्सटेंड योर JPA repository, user and integer, right? So this is the thing. And then you can use repository in a Spring MVC controller or business class like this. So बाद में वो उसको यूज कैसे करना है उन्होंने सिंपल में बताया है, कंट्रोलर, ओके, ऑटोवैट, गिट मैपिंग। तो जस्ट वैसे करके तुम लोग जो कंट्रोलर है यूजर कंट्रोलर उसको जस्ट यूज कर सकते हो, सिंपल। दिस इज योर क्लास यूजर कंट्रोलर। तो एग्जैक्टली एक्चुअली ये क्या है, प्रोग्राम तुम लोग एग्जीक्यूट करोगे ना, सो तुम लोग को समझ में आएगा कि हाउ इट एक्चुअली वर्क्स और हेल्प्स द प्रोग्रामर डेवलपर, राइट। ओके, एनीवेज क्या बाकी है। ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज इजी ऑफ डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, की जो डिपेंडेंसी मैनेज करना है तो वो easy क्यों है, why it is more used, okay. So to speed up the dependency management process, Spring Boot implicitly package the required third-party dependencies for each type of Spring-based application and provides them through so-called starter package, okay. Starter package हम लोग जो बोल रहे थे, या तुम लोग को डेटा यूज करना तो starter data JPA, right, starter web, वही है, right. So starter package are collections of handy dependencies descriptors that you can include in your application. Just तुम लोग को application में वो dependencies add on करना है, right? They allow you to get universal solution for all the Spring related technologies, removing the necessity for search for code examples, the load the required dependency descriptor from them. तो तुम लोग को अलग से code डिस्क्रिप्टर वगैरह वो कुछ लिखने की जरूरत नहीं डिपेंडेंसी डिस्क्रिप्टर का। Okay, so for instance, if you want to start using Spring Data JPA to access your database, just include the Spring Boot Data Data JPA dependencies in your code project, right? You will be done. No need to look for compatible Hibernate database drivers and libraries and all. So if you want to create Spring Web application, just add the Spring Boot starter web dependency. जैसे उन्होंने एग्जांपल्स दिए कि अगर तुम लोग को डेटा से करना है तो तुम लोग क्या करोगे, डेटा जेपीए यूज करोगे डिपेंडेंसीज का, वेब एप्लीकेशन करना है तो वेब डिपेंडेंसीज यूज करोगे स्टार्टर डैश वेब का। तो दीज आर द थिंग्स जस्ट उन्होंने एक्सप्लेन किया है। Automatic configuration is the part of your Spring Boot. So one of the advantage of Spring Boot that is worth mentioning is automatic configuration of the application. After choosing a suitable starter package, Spring Boot will try to automatically configure your Spring application based on the jar dependencies.
you add it. जो भी तुम लोगों ने ऐड किया रहेगा वो. If you add Spring Boot starter with, Spring Boot will automatically configure registered bins such as dispatcher servlet, resource handlers, message resource. So these are the things all are included already in your boot starter web. Okay, so just तुम लोग को ये mention करना है. So these things will added automatically. If you are using Spring Boot Starter JDBC, Spring Boot automatically register the data source, entity manager factory, transaction manager bins, and reads the database connection information from your application properties file. Right? So just तुम लोग ये mention करोगे boot starter JDBC, it will work on. Right? So ऐसे उन्होंने just examples दिए हुए हैं. Right? Yeah, the next part is native support for application server. Okay, servlet container. So every Spring Boot application includes a embedded web server. Developers no longer have to worry about setting up servlet container and deploying an application to it. Correct? So the application can now run itself as an executable jar file using a built-in server. If you need to use separate HTTP server, simply exclude the default dependency. Okay. Spring Boot provides separate starter package for different HTTP server. So building standalone web application with embedded server is not only convenient for development but also valid solution for enterprise grade application. What's more, it's becoming increasingly useful in the world of microservices. अभी तुम लोग ने भी देखा रहेगा microservices बहुत use होते हैं, right? You are working in IMSS, तो तुम लोग को ये सब पता ही रहेगा. The ability to quickly package an entire service into a standalone and fully deployable artifact that also provides API makes installing and deploying an application much easier. ये सब theory है, वही वही सब लिखा है. Okay. One of the key advantage of Spring Boot is the configuration of resources based on the content of the class path. Spring Boot is pretty intuitive when it comes with the default configuration. You may not always agree with the choice of the setting, but at least it will provide you with the working model. This is a very useful approach. Of course हम लोग भी कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं हम लोग डिफॉल्ट सेटिंग्स ही रखते हैं. हाँ, बट हम लोग वो उसको चेंज भी कर सकते हैं. हम लोग को जैसे चाहिए कॉन्फ़िगरेशन हम लोग वैसे सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं. बट मोस्टली हम लोग डिफॉल्ट ही रखते हैं. सो उन्होंने वही बताया हुआ है. नॉट बिग थिंग. Okay, so now the next thing is Spring Boot RESTful Web Services. I hope सबको वेब सर्विसेज क्या होता है मालूम है. What is REST? Representational State Transfer. What is this? क्या लिखा है? रीड करो. ओके, जावा का फिर से सैटरडे को लेक्चर है, राइट? 6 to 8. सैटरडे को तुम लोग का आई गेस सुजाता मैम का लेक्चर रहता है ना. तो दिस टाइम जावा का ही लेक्चर रहेगा ऑनलाइन 6 to 8. तो तब हम लोग मोस्टली ट्राई करेंगे 11th वाला जो है वो भी चैप्टर कंप्लीट करने के लिए.
Okay, so coming back to the REST, Spring Boot RESTful Web Services. So REST stands for Presentational State Transfer. It is deployed by Roy Thomas Fielding, who also developed HTTP. The main goal of RESTful web services is to make web services more effective. RESTful web services try to define services using the different concepts that are already present in HTTP. REST is in an architectural approach, not a protocol. So ये जरा ध्यान में रखना. Okay. So it does not define the standard message exchange format. We can build REST services with both XML या तो फिर JSON. JSON is more popular format with REST. The key abstraction is a resource REST. Resource can be anything. It can be accessed through a uniform resource URI, right? तो these are the things कि हम लोग क्या कर सकते हैं. जो भी हम लोग वेब सर्विसेज बना रहे हैं वो वेब सर्विसेज तुम लोग रेस्ट यूज करके करोगे. सो वी कैन क्रिएट एक्सएमएल का भी और जेसन का भी. मोस्टली जेसन के साथ में करते हैं ऐसे. ओके. Then why REST is popular? It allows the separation between client and the server. So these are the benefits or you can say advantages. Okay, so क्यों यूज करते हैं REST का वो यहाँ पे दिया हुआ है. So it allows the separation between the client and server. It does not rely on a single technology or a programming language. Okay, you can build a scalable application or even integrate two different applications using REST APIs. ओके. तुम लोग ने ये मोस्टली सुना भी रहेगा. यू हैव मोस्टली यूज तुम लोग ने यूज भी किया रहेगा रेस्ट एपीआई को. REST is again stateless and use basic HTTP methods like get, put, post and delete like that. Right? ये सब तो तुम लोग को methods मालूम रहेंगे HTTP के for communication between client and server. Right? The resource has representation like XML, HTML and JSON. ओके. सो तुम लोग कौन सी भी फाइल यूज कर सकते हो. XML, HTML, JSON. The current state capture the representational resource. When we request a resource, we provide the representation of resource. More important methods HTML. ओके. तो उन्होंने HTTP के जो मेथड्स इंपॉर्टेंट वाले हैं जो हम लोग को ऑलरेडी पता है. आई गेस तुम लोग को भी पता रहेगा. ओके. गेट एंड पोस्ट तो आई गेस 100% मालूम ही रहेगा. गेट इट रीड्स द रिसोर्स. ओके. पुट क्या करता है. इट अपडेट्स एन एग्जिस्टिंग रिसोर्स. ओके. पोस्ट इट क्रिएट्स न्यू रिसोर्स. delete of course delete the resource. Simple. So these four methods is very important in your HTTP, right? So for example, if we want to perform the following action in the social media application, we get the corresponding result. Post users, it creates a user. Get user, and we are passing ID. It retrieves the details of the particular that ID user. Okay. Then get users किया, it retrieves the detail of all users. अगर मैंने ID mention किया ID of course. Delete users, all deletes, it deletes all users. Then particular ID mention किया, so it deletes a particular user. Then get users ID, post ID. It retrieve the detail of specific post. अगर वो जो आईडी जो मेंशन किया रहेगा यूजर का उसका जो पोस्ट रहेगा उसको पोस्ट आईडी से फाइंड आउट करेगा और पर्टिकुलर वो स्पेसिफिक जो पोस्ट रहेगा उसको वो फेच करके लाएगा. देन पोस्ट यूजर आईडी post. So it creates a post for the user. These are the things they have given example for your social media, right? Get, post, delete कैसे यूज होता है. Then REST controller. So the
@REST controller annotation is used to define RESTful web service. It serves JSON, XML and custom response. The syntax is below. So हम लोग को REST controller mention करना है. Then just class create करना है. अभी हम लोग ने यहाँ पे क्या क्लास का कुछ एक नाम देके हाँ प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट सर्विस कंट्रोलर लाइक दैट. ओके सिंपल. पर उसके पहले हम लोग को जस्ट बताना पड़ेगा कि इट इज अ रेस्ट कंट्रोलर, राइट. देन रेस्ट मैपिंग. ओके सो मैपिंग करना है तो REST mapping annotation is used to define the request URI to access the REST endpoints. We can define request method to consume and produce object. The default request method is get, right? So request mapping उन्होंने देखो यहाँ पे mention किया है value products क्योंकि we are going मतलब product service बना रहे हैं ना इसलिए वो products उन्होंने mention किया है value. Okay, then public response entity ऑब्जेक्ट हम लोग रिटर्न करेंगे एंड गेट प्रोडक्ट्स. सो जितने भी प्रोडक्ट्स है वो उसका वो एक ऑब्जेक्ट बनेगा रिस्पॉन्स एंटिटी में और वो रिटर्न होगा, राइट. ये मेथड में मैपिंग करके क्या मैप कर रहे हैं हम लोग ऑल प्रोडक्ट्स. ओके सो वो गेट प्रोडक्ट से वो सारे प्रोडक्ट्स को ऑब्जेक्ट में रिटर्न करेगा मैप करके. तो रिक्वेस्ट बॉडी अभी ये क्या है. Request body annotation is used to define request body content type. कौन सा टाइप है वो. ओके सो पब्लिक रिस्पॉन्स टाइप ऑब्जेक्ट क्या है क्रिएट प्रोडक्ट. हम लोग प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं बट पैरामीटर में हम लोग ने उसको बोला है रिक्वेस्ट बॉडी प्रोडक्ट. ओके तो उन्होंने वैसे मेंशन किया है रिक्वेस्ट बॉडी प्रोडक्ट. ये एक्चुअली दिस इज योर वेरिएबल एंड दिस इज योर टाइप. दिस इज टाइप वी आर मेंशनिंग कि हाँ रिस्पॉन्स बॉडी का प्रोडक्ट का ये प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट है, राइट. देन path variable. So path variable annotation is used to define custom और dynamic request URI, right. path हम लोग को mention करना है simple. So the path variable is request URI is defined as curly brackets as shown below. So object return हो रहा है update product is your method name और यहाँ पे हम लोग जो भी ID है वो मेंशन करेंगे पाथ जो वेरिएबल रहेगा. सी यहाँ पे पाथ मेंशन करें तो हम लोग बोलोगे मैम यहाँ पे ID क्यों मेंशन किया. सो एक्चुअली इट इज अ स्ट्रिंग. ओके सो वो बता रहे हैं हम लोग कि ID में क्या है जो भी URI रहेगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में वो हम लोग मेंशन करेंगे. दिस इज माय URI लाइक दैट स्ट्रिंग का. ओके देन come to your request parameter. So request param is annotation is used to read the request parameter from the request URL, right. So by default it is required parameter. We can also set default value for request parameter as shown here. So public response object response entity object हम लोग को मेंशन करना पड़ेगा. ओके मेथड नेम इज गेट प्रोडक्ट. अभी इसमें हम लोग ने क्या किया देखो पैरामीटर्स मेंशन किए वैल्यूज. ओके सो नेम. ओके वैल्यू इज व्हाट नेम. रिक्वायर्ड व्हाट रिक्वायर्ड फॉल्स रखा है हम लोग ने. रिक्वायर्ड मतलब वो रहता है रिक्वायर्ड फील्ड वाला वैसे वाला. डिफॉल्ट वैल्यू उसका क्या रहेगा कुछ तो एक मेंशन किया है उन्होंने, राइट. एंड कुछ नाम ले रहे. ओके जो भी नाम आएगा वैल्यू वेरिएबल को उसको वो असाइन होगा. दिस इज लाइक योर वेरिएबल. ओके एक वेरिएबल बना हम लोग ने नेम और जो भी आएगा उसमें वो असाइन हो जाएगा. इट इज रिक्वायर्ड फॉल्स और इसका हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू अगर कुछ नहीं डाला तो वो कुछ रैंडमली जो भी हम लोग ने मेंशन किया है वो वैल्यू ले लेगा. देन इट इज टेलिंग अस अबाउट गेट API, पोस्ट API, पुट API. ओके सो फिर से वही है द डिफॉल्ट HTTP रिक्वेस्ट मेथड इज गेट. हम लोग को पता ही है डिफॉल्ट इज गेट, राइट. हमेशा याद रखो. So this method does not require any request body. You can send request parameters and path variables to define the custom or dynamic URL. Then post.
पोस्ट में क्या है, द HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट इज यूज टू क्रिएट अ रिसोर्स, दिस मेथड कंटेन्स द रिक्वेस्ट बॉडी, हम लोग को वो रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके लिए रिक्वेस्ट बॉडी, वी कैन सेंड रिक्वेस्ट पैरामीटर्स एंड पाथ वेरिएबल, right? Request parameters and path variable to define the custom and dynamic URL, right? Then put API. The HTTP put request is used to update existing resources. Okay, this method contains a request body. We can send request parameters and path variables to define a custom and dynamic URL, right? So these are the things. तो अभी यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है। बहुत बड़ा प्रोग्राम ही है आई गेस। ओके, सो उन्होंने एक एग्जांपल दिया है, एक प्रॉपर प्रोग्राम दिया है। ओके, ये सब एक्सप्लेन करने के लिए। तो सी मैं पूरा प्रोग्राम एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, फास्टली हम लोग, मैं जस्ट तुम लोग को बताती हूँ। तुम लोग जब तुम लोग का प्रैक्टिकल रहेगा तब तुम लोग प्रॉपर्ली ये एग्जीक्यूट कर लेना। ओके, स्प्रिंग बूट रेस्ट एग्जांपल उन्होंने दिया है। टू क्रिएट अ स्प्रिंग बूट रेस्ट प्रोग्राम वी हैव टू फॉलो 4 स्टेप्स। फर्स्ट क्या है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट यूजिंग अ स्प्रिंग टूल सूट एंड स्प्रिंग इनिशियलाइजर प्रोजेक्ट, then add dependencies in the maven pom file, then add controller and expose REST APIs. Okay, add services, service layer to communicate with Spring Data JPA, CRUD repository interface. So उन्होंने वो स्टेप जो 4 है वो नीचे कैसे करने हैं वो एक्सप्लेन किया हुआ है। Just they have created a new Spring Boot project. Okay, so this is how they created. Okay, see URL मेंशन किया है, नेम दिया है, आर्टिफैक्ट ये सब, जार फाइल है, लैंग्वेज जावा, टाइप बताया है, वर्जन बताया है। ओके, बाकी ये एक्चुअली सब ऑप्शनल रहता है डिस्क्रिप्शन में। सो ओके, सो यहाँ पे देखो न्यू स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज। तो यहाँ पे उन्होंने सब बताया है कि वो क्या यूज कर रहे हैं। H2 डेटाबेस मार्क किया है, अवेलेबल कौन सा है, H2 है, राइट। स्प्रिंग वेब स्टार्टर, दे आर यूजिंग स्प्रिंग वेब स्टार्टर। ओके, सारे जो है क्लाउड का भी है, स्प्रिंग सिक्योरिटी, वो सब उन्होंने प्रॉपरली मेंशन किया है, मार्क किया है। So according to your requirement, you can select the things, right? So these are the things। see यहाँ पे हम लोग ने मॉडल वर्जन मेंशन किया, उसके अंदर पैरेंट है, पैरेंट के अंदर ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट, वर्जन बताया है, दैट इज सी स्प्रिंग फ्रेमवर्क बूट स्टार्टर पैरेंट।
तो देयर आर सो मेनी मतलब ऐसे बहुत सारे पैकेजेस और ये है, तुम लोग जो भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे उन्होंने पैरेंट का यूज़ किया है, ओके। ग्रुप आईडी कोड डिले डॉट रेस्ट। उन्होंने मेंशन किया था कि कौन सा जार फाइल हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सो दीज़ आर द थिंग कि उसका हम लोग वर्ज़न बता रहे हैं, ओके। प्लगइन कौन सा यूज़ हो रहा है एंड ऑल, ओके। बोट स्टार्टर डेटा जेपीए डिपेंडेंसीज ऐड किया है, देखो ये वाला। देन अगेन हम लोग यहाँ पे स्टार्टर वेब का भी ऐड करें। स्टार्टर डेटा जेपीए, स्टार्टर वेब, सो दे आर टू डिपेंडेंसीज। देन H2 हम लोगों ने बताया था, राइट, कि हम लोग H2 डेटाबेस यूज करेंगे। सो दैट इज द थर्ड डिपेंडेंसीज। देन सी टेस्ट करना है, सो उसके लिए स्टार्टर टेस्ट वो भी है। डेव टूल्स कौन सा हम लोग बूट करने के लिए यूज करेंगे, डेव टूल्स यूज करेंगे। सो वो भी डिपेंडेंसीज, ऐसे हर एक डिपेंडेंसीज को तुम लोग को ऐड करना पड़ेगा। सो उसका एक मतलब मैं डिसएडवांटेज लिखा था कि जो अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसे मैं टेस्ट का नहीं यूज कर रही हूँ, सो अगर मैंने वो भी अगर ऐसे ऐड किया, ऐसे मल्टीपल मैंने डिपेंडेंसीज ऐड किया, सो उसका फाइल बड़ा हो जाएगा, हेवी हो जाएगा। सो दिस इज वन डिसएडवांटेज ऑफ दैट कि हम लोग डिपेंडेंसीज ऐड तो कर रहे हैं पर उसका यूज नहीं करेंगे। दैट इज द थिंग। एंड या द लास्ट वन इज प्लगइन्स, हम लोग कौन से प्लगइन्स यूज कर रहे हैं, सो वो हम लोग यहाँ पे मेंशन करें। Maven plugin, right? So this is your Maven dependency tree. Okay. ये सब कोड करने की जरूरत नहीं है, डिपेंडेंसी ऐड करने के बाद में ये सब ऐड हो जाएगा। सो हम लोग को क्या करना है, सो टू क्रिएट अ यूजर मैनेजमेंट सिस्टम लेट्स फोकस ऑन राइटिंग 5 बेसिक APIs, दैट इज दिस, ओके। तो इस पे फोकस करना है। गेट, ओके, गेट ऑल द रिटर्न्स, लिस्ट ऑफ द यूजर डिटेल्स, get find id, so सिर्फ पर्टिकुलर id का। then post add all sorry add user into a database, अपडेट करना है तो उसका पर्टिकुलर id का यूजर का हम लोग कर सकते हैं यूजिंग द पुट। एंड डिलीट करना है तो उसका पर्टिकुलर id मेंशन करना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट चीज। सो तुम लोग जब परफॉर्म करोगे तुम लोग को एटलीस्ट का समझ में आ जाएगा। देन सी यहाँ पे सारे पैकेजेस उन्होंने ऐड किए हैं, राइट। रेस्ट कंट्रोलर, वैलिडेशन, स्प्रिंग फ्रेमवर्क, बीन्स कौन से कर रहे हैं, डिलीट मैपिंग एंड ऑल, राइट। सो these are the things. ओके, सो देखो यहाँ पे ये जो मेथड है, ओके, पब्लिक यूजर, एड यूजर, ओके। सो इन दिस गेट मैपिंग हम लोग ने यूज किया है, पोस्ट मैपिंग, रिस्पॉन्स स्टेटस, ओके, पाथ वेरिएबल, put mapping. So these are the things we are using, annotation we are using, delete mapping, okay. So जो हम लोग ने पहले एग्जाम्पल देखे थे ना एनोटेशन के, सेम वैसे ही यहाँ पे सब यूज हो रहे हैं, राइट। सी एनोटेशन रिक्वेस्ट बॉडी यूजर और उसका ऑब्जेक्ट यूजर, देन हम लोग उसका जो भी आईडी आएगा, ओके, का हम लोग पाथ वेरिएबल थ्रू उसको वो आईडी जो वेरिएबल है पाथ वेरिएबल का उसको असाइन करेंगे like this, and at the end it will return this user by id जो मेथड है उससे वो कॉल करेगा, यूजर नेम एंड आईडी सेंड करेगा एंड जो भी इंफॉर्मेशन आएगा वो अपडेट कर देगा, ओके। ऐड और अपडेट,
So this is the thing. Then this is service layer. The service layer acts as a intermediate layer between controller and repository class. Okay, so it is like your controller. उन्होंने MVC का दिया है एग्जाम्पल, राइट? सो दिस इज कंट्रोलर. इन्होंने यहाँ पे कुछ पैकेजेस ऐड किए हुए हैं, राइट? ओके, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं. पब्लिक क्लास, यूजर मैनेज सर्विस, उसमें ऑटो वायर्ड यूज किया हुआ है. ओके, थोड़ा सा रिवाइज करो, सिलेबस थोड़ा याद आना चाहिए ये सब चीज, ऑटो वायर्ड वगैरह, राइट? क्या है इसमें? ओके, अभी यहाँ पे उन्होंने एंटिटी क्लास क्रिएट किया है. नाउ लेट्स क्रिएट एन एंटिटी क्लास विच इज अ सिंपल पोजो क्लास, राइट? सो ये भी पोजो क्लास भी हम लोग ने ऑलरेडी कर चुके हैं. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग revision is important, right? Entity class also represent table in a database. तो उन्होंने यहाँ पे यूजर क्लास क्रिएट किया इंस्टेड ऑफ दिस थिंग. तो यहाँ पे जो उन्होंने एंटिटी बनाया है, टेबल बनाया है, दैट इज यूजर डिटेल्स. तो यूजर डिटेल्स के अंदर उन्होंने सारे वैल्यूज लिए हैं. ओके, आईडी, यूजर आईडी, उसका टाइप लिया है. ओके, कॉलम क्या रहेगा, यूनिक, नलेबल, लेंथ कितना रहना चाहिए. These are the things they have mentioned for user ID as well as your username, then password. So this is your private variable. Okay, और जो भी पासवर्ड वो सेट करेगा. सी गेट यूजर आईडी, तो हम लोग गेट मेथड यूज करें, यहाँ पे सेट मेथड यूज किया है. देन यूजर नेम, गेट यूजर नेम, सेट यूजर नेम, गेट पासवर्ड एंड सेट पासवर्ड. सिंपल, जो तुम लोग का पोजो क्लास हम लोग यूज करते हैं वैसे वाला, राइट? देन रिपोजिटरी इंटरफेस लिया है, इंटरफेस क्रिएट किया है. यूजर रिपोजिटरी एक्सटेंड्स CRUD रिपोजिटरी यूजर एंड इंटीजर. जस्ट हम लोग ने देखा था वो रिपोजिटरी इंटरफेस कैसे क्रिएट करते हैं वो. सो वैसे ही यहाँ पे ही यूज किया है. See, अगर कुछ एक्सेप्शन आया, so how they are going to use this exception. See, public class user not found exception. ओके, ये उन्होंने क्लास क्रिएट किया. एक्सटेंस क्या कर रहा है, रन टाइम एक्सेप्शन. ओके, सो ये एक्सटेंड कर रहा है. अभी उसके अंदर उन्होंने एक मेथड बनाया, यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और जस्ट पैरामीटर से आईडी आ रहा है एंड वी आर कॉलिंग द पैरेंट. पैरेंट मतलब रन टाइम एक्सेप्शन में जाएगा वो यूज, और वहां से वहाँ इस ऊपर जो है वो रन टाइम एक्सेप्शन को के पैरेंट क्लास को कॉल करेगा, और यूजर आईडी नॉट फाउंड और जो भी आईडी रहेगा वो वहां से फेच करेगा. फाइन, सिंपल है. और ठीक है. सो लाइक दिस जस्ट रिस्पॉन्स एंड एरर. ओके, एक्सेप्शन हैंडलिंग का सब कुछ है. एक्सेप्शन हैंडलर क्या करेगा वो सब एक्सप्लेन किया हुआ है. कंट्रोलर एडवाइस, ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर क्लास क्रिएट किया है. ओके, फिलहाल के लिए फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना बड़ा प्रोग्राम तुम लोग को लिखने के लिए तो नहीं आएगा. जस्ट कंसेप्ट वाइज जाओ
ओके, होपफुली तुम लोग को अगर प्रैक्टिकल्स ये संडे हो गया तो तुम लोग को जो भी डाउट कुछ रहेंगे तो वो भी समझ में आएगा, कुछ मेथड्स में कुछ है तो। ओके, सो बेसिकली अभी वी आर कंप्लीटिंग द 10th वन ऑल्सो। सो 10th वाला भी हम लोग का बूट वाला भी, स्प्रिंग बूट वाला भी कंप्लीट हो चुका है। सो अगेन आई एम सेइंग कि अगर तुम लोग को क्वेश्चन पेपर मिले हैं सो रेफर दैट क्वेश्चन पेपर, मोस्टली सेम। जी, जैसे तुम लोग को बोला कि जैसे ही पेपर सेट होता है तो मोस्टली टीचर्स रेफर्स द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एज वेल एज द बुक। जो तुम लोग को रेफरेंस के लिए बुक्स देते हैं वही यूज करते हैं। सो रेफरेंस के लिए तुम लोग को यही पीडीएफ है। सो पीडीएफ के नीचे जो भी तुम लोग को क्वेश्चंस रहेंगे तुम लोग वो देख सकते हो, राइट? ओके, सो एनीथिंग एल्स, कुछ पूछना है अगर तो पूछ सकते हो। This lecture we will start with the 11th chapter, that is understanding transaction management in your Spring.